Hello everyone, welcome to the Next Topper Institute. My name is Pooja Singh and I'm gonna take your chemistry lectures for class 10. So guys, before start, if you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell button for any new updates or notifications. Thank you. So our today's topic is chemical reactions and equations. So guys, I'll go with the basic. I'll take the simple example to make it more understandable. So there are two type of changes that are physical and chemical changes. So what are physical changes? वैसी change जिसमें physical properties change होती हो. Physical properties जैसा कि किसी भी substance, किसी भी atom, molecule, compound का color, उसके smell, या फिर हम उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी फिजिकल बिहेवियर क्या है, इसे हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. तो अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, दैट कम्स अंडर द फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसका गाल लाल हो जाता है, दैट कम्स अंडर द फिजिकल चेंज. या फिर आप किसी चेयर को उठा के रख रहे हो, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, किसी चीज को मिक्स कर रहे हो, या आप कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उस कैन की बॉटल को क्रश कर देते हो, उसे आप वापस इसकी शेप में लाना चाहोगे, which is not possible. Sometimes some changes, some physical changes are possible to bring it back to the original state. For example, melting of ice. Ice अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वापस से वो वाटर बन जाता है, एंड अगर हम उसे फ्रीज कर दें अगेन वो आइस बन जाता है. So it is reversible or irreversible. So we cannot decide a physical change with the criteria reversible or irreversible. This is one of the point. Now, what do you understand by the reversible? वैसी change या process जिसमें किसी substance या compound का original state behavior हम वापस से उसको ला सकते हैं under a certain process, उसे हम reversible reaction कहेंगे. and irreversible जिसमें हम नहीं ला सकते हो. सपोज किसी दो कंपाउंड को रिएक्ट करा के हम कोई न्यू कंपाउंड प्रोडक्ट्स फॉर्म करा रहे हो, बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, then we cannot bring it back. It's permanent. So this is called a chemical change. Now chemical changes. तो वैसे change जिसमें chemical properties change होता हो. Now chemical properties are like toxicity. कोई चीज अधिक जहरीला होता है, कोई उससे कम होता है, कोई ज्यादा एसिडिक होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है. So there are certain levels that are defined to each atom or molecule. Some have high level of heat of combustion. For example, paper जल्दी से आग पकड़ लेता है as comparison to wood, क्योंकि उसका combustibility high है. हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है लोहा. लोहा पानी और हवा के चलते
उससे इंटरैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड देन इट फॉर्म अ रस्ट. So these all are comes under the chemical properties. So if you change these chemical properties under certain process, chemical reactions, situations, the chemical changes occur. So we will move on to our next slide. See, there are some example of physical change and chemical change. So melting of ice, as I said, this is a physical change. Rusting of iron. As we all know, we have a lot of iron in our country. So हम इसे रोक सकते हैं to further oxidize, मगर इसके जंग को हटा नहीं सकते हैं. So we need to take some precautions to avoid this chemical change in order to preserve our iron. Third one is formation of curd. दूध से दही बनाना भी एक chemical change है. So here we have the difference between the physical change and chemical change. So guys, before discuss these differences, please make a note of this because this is one of the most important question for CBSE board class 10 and it usually asks from this chapter. So physical change, as I said, change is temporary. Like आपने किसी को मारा, कुछ सामान उठाया, these all are temporary. It cannot be like, you cannot fix the change. But chemical change is permanent if when you react that reactants, some new products form. So you cannot change it back to its original state. So here we can say ये change permanent है. जो बन गया सो बन गया, वापस नहीं बदल सकते. Physical change में कोई नया सब्सटेंस नहीं बदलता है. आप ह्यूमन एफर्ट से फिजिकली कुछ चेंज कर देते हो, दैट्स इट. वो वहीं तक सीमित है, कोई नया चीज नहीं बनेगा. लेकिन केमिकल चेंज में आप केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी दो मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एटम को रिएक्ट कराते हो, जिससे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगा फॉर श्योर. Third physical changes, change can be reversed by simple physical methods. As I said, physical change can be reversible or irreversible. For example, crushing of can. You cannot regain its original shape and size. Second one is balloon. अगर आप किसी बलून को फुलाते हो और दबाते हो तो उसका शेप साइज बिगड़ जाता है, मगर जैसे ही आप उसे छोड़ते हो वो वापस से अपना असली आकार ले लेता है. So this comes under the irreversible, the first one, and balloons example is reversible. So it third example of physical change. And the third example of chemical changes, it cannot be reversed by simple physical methods. Yes, with the help of some further chemical reaction, आप उसको change को reverse कर सकते हो, but आप without physically अगर आप कुछ चाहोगे वापस से उसका original state या shape लाना, it's not possible. Now the fourth one is energy may or may not be released or absorbed. फिजिकल चेंज में आप खुद से कुछ कर रहा है इंसान, तो उसमें कहीं से कोई एनर्जी नहीं रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है. सिंपली कुछ उठाना, बैठाना, रखना, करना is not releasing any kind of energy. But for the chemical change, for sure some energy will either release or absorb by the atoms during the chemical change. For example, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, तो आप ऐसे लिखो कि हर किसी में रिलीज और एब्सॉर्ब होता ही होता है. We will discuss it more in our next tutorial. So on further moving our next slide, if you have any issue regarding my pace, मैं अपनी पढ़ाने की गति को बढ़ाऊं, कम करूं, इंग्लिश बोलूं, हिंदी बोलूं, please comment me on the comment section. It will be more understandable for you guys. So our next slide is chemical reaction. So इसके definition से ही पता चल रहा है
वो चेंज जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कोई भी कंपाउंड को रिएक्ट कराओ, केमिकल चेंजेस परफॉर्म कराओ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आप चेंज करते हो, उसके कंबस्टिबिलिटी, हीट ऑफ कंबशन हो गया, आपका टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, या इन सब प्रॉपर्टीज को आप चेंज करते हो अंडर सर्टेन रिएक्शन दैट कम्स अंडर द केमिकल रिएक्शन। मगर ये होता कैसे है? तो जब आप किसी दो चीज को रिएक्ट करते हो तो पहली बात तो कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता कैसे है? उनके आपस में बॉन्ड होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयर्ड बॉन्ड। उस बॉन्ड से वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा रहता है। तो इसको हम या तो तोड़ते हैं अंडर द केमिकल रिएक्शन या फिर उसे जोड़ते हैं। इन जोड़ना और तोड़ना को अंडर सर्टेन प्रोसेस और रिएक्शन, ताकि वो नया सब्सटेंस बना सके, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। The second definition is the more technical one and more understandable. So our next slide is chemical equations. So guys, इतनी चीजों को जो मैंने आपको बताया कि हीट रिलीज होता है, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम सामने वाले को समझाएंगे कैसे? इसके लिए हमने इक्वेशंस बनाया है। हर एटम के लिए उसको रिप्रेजेंटेशन एक दे रखा है जो उसे रेफर करता हो। लाइक मैग्नीशियम को Mg से बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 से बोलते हैं। नाउ इन सबको आपस में रिप्रेजेंट कराता है एक इक्वेशन विच इज केमिकल इक्वेशन। एंड जो लेफ्ट साइड में जो रिएक्ट करता है आपस में, जो एटम आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस देता है, उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। सो नाउ here it is magnesium plus oxygen, magnesium oxide. So guys, जैसा हमें पता है ऑक्सीजन फ्री स्टेट में O2 की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नीशियम Mg की तरह। ऑन आवर फर्दर ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगी कि फ्री स्टेट में कोई एटम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा कटायन होता है, कौन सा अनायन होता है, SO4 पे -2 का चार्ज क्यों आता है या +2 का चार्ज क्यों आता है, हम लोग एल्युमिनियम को +3 से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। So these all are actually defined with the help of their atomic number. So for now it's basic, so we'll go slowly. So here, and one more important thing, every reaction is balanced. Like whatever the number of atoms we have in our left hand side, that is reactants, must be equal to the right hand side, that is products. अगर हमने एक मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में यूज किया है तो प्रोडक्ट में भी एक ही मैग्नीशियम होगा। नाउ सी हाउ वी बैलेंस्ड। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट आया वो MgO आया। ये भी कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि हमारे पास MgO आया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स होंगे हर एलिमेंट में, उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को, जो एलिमेंट्स है हमारा, लाइक एक एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, तो कितने एटम्स है उसमें? 2 एटम है। ओके, जितने होंगे उतने ही हमारे राइट हैंड साइड में भी होंगे। Reactants and products should be equal, the number of atoms on each element. So how will make it equal? So guys, यहाँ पे देखो एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम का तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन का नहीं है, तो 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे which is 2। तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई इन द सेंस 2 लाना है हमें दोनों साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब आप नीचे इक्वेशन में देख सकते हो कि 2NgO बन गया हमारा। तो यहाँ जब मैग्नीशियम 2 हुआ है तो हमारा लेफ्ट साइड में 2 मैग्नीशियम होना बनता है। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में तो 2 है ही, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वे वी आर डूइंग। सो इन दिस केस मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एलसीएम लो जिस भी एलिमेंट के एटम्स बैलेंस नहीं है, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करो एंड मेक इट बैलेंस। बिलीव मी, इट विल डेफिनेटली वर्क। So that's all for today. Thank you for watching, guys. If you have any queries, please mention in the comment section. I will try to answer all those. Thank you so much.